Hello, my dear students. You are watching Brainmasters Spoken English today. I shall teach you some dialogues from the Duchess of Malfi. It is now going on. The Duchess of Malfi, which is written by Webster, he has written it in the very good English. Today, we are not using such English. But remember, whenever I will give you the first line, it is the original line from the Duchess of Malfi. And in second, I shall make a paraphrase that will easy for you to understand. Now look at here, the Antony entered the stage. As the Duchess says, Duchess, take pen and ink and write. Are you ready? Now look at this sentence, how she's speaking. Take pen and ink, has a comma, and write, here is the colon. Are you ready? Here is the question marks. Now it is the stylistic way of telling. Take pen and ink and write, are you ready? What she already has told her that I am making a paraphrase. Look at this paraphrase. I called you, sit down. Take pen and ink and write. Are you ready? Here is this. It is a paraphrase. Antony replied, yes. Antony said, yes, I can do that. Here is the Duchess. What did I say? नाउ डचेस यहां पर कहती है कि मैंने क्या कहा एंटोनियो, दैट आई शुड राइट समव्हाट, यानी कि मैं यहां कुछ लिखूं. दैट मीन्स यू लाइक मी टू राइट डाउन समथिंग, दैट आई शुड राइट समव्हाट. हियर द एंटोनीज ओरिजिनल लाइन, देयर इज नो पैराफ्रेज आई एम मेकिंग. You can understand it very clearly. Duchess, look at this sentence, how Duchess expressed herself. A Webster writes very minutely. Oh, remember, after this triumph and this large expense, it's fit like thrifty husband. We inquire what's laid up for tomorrow. यहाँ पर ये कहना क्या चाहती है? पहला बात देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड का इस्तेमाल की. ओ रिमेंबर, यहाँ पर कहीं वो रिमेंबर, याद रखो. आफ्टर दिस ट्रायम्फ्स, यहाँ पर जो ट्रायम्फ्स, यहाँ पर जो ट्रायम्फ्स का इस्तेमाल किया गया, इसका माने क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स? हियर इज द ट्रायम्फ्स इज सक्सेस, विक्ट्री, लार्ज एक्सपेंस, हमारा बहुत खर्च होगा. इट्स फिट लाइक 50 husband. 50 means that is called economic और कंजूस. इकोनॉमिक हस्बैंड यानी कि कंजूस हस्बैंड. याद रखो, thrifty. Whenever you use this word thrifty, is a thrifty. That means वो क्या है? कंजूस है. Close fisted, might you. We inquire what laid for tomorrow. अगर हम यहाँ खर्च कर देंगे, ये हस्बैंड मेरा जो है thrifty है, खर्च कर दें तो फिर लीड रखेंगे क्या कल के लिए? अगर हम इस सेंटेंस को देखेंगे तो पैराफ्रेज करके, तो देखिए इस सेंटेंस का पैराफ्रेज के साथ. आई रिमेंबर, मुझे याद है. आफ्टर दिस रेवलरी का मतलब है सबसे ज्यादा आमोद प्रमोद करना, ड्रिंकिंग एंड एंजॉयमेंट करना. और मास्क मतलब कावर, एंड ट्रायम्फ्स का मतलब होता है जीत, सक्सेस, इसेट्रा. एंड मच एक्सपेंडिचर, बहुत ज्यादा खर्च होगा. ऑन देम इट इज नेसेसरी टू नो, ये जरूरी है जानना. व्हाट रिमेन फॉर फ्यूचर, अगर हम यहाँ खर्च कर देंगे तो व्हाट रिमेन फॉर फ्यूचर, हम क्या रखेंगे फ्यूचर के लिए? एज 50%, यानी कि जो 50 हस्बैंड ऊपर में बोलिए, देखो 50%, 50 माने कंजूस शख्स. ट्राई टू नो, शुड ट्राई टू नो, क्या वो जान सकता है, जानना चाहिए या नहीं? एंटोनियो रिप्लाई करता है. एंटोनियो, शो प्लीज योर ब्यूटियस एक्सेलेंस.
यहां पर कहा शो प्लीज योर ब्यूटियस एक्सलेंस, यहां पर मक्खन लगा रहा है कि आप जो चाहेंगी एक्सलेंस, आप महारानी हैं। अगर इसका फ्रेज करते हैं, यस योर ब्यूटीफुल एक्सलेंस, आप बहुत ही मेजेस्टिक हैं, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। आप बोलिए। डचेस बोलती है ब्यूटियस, indeed I think you, I look young for you, your check, you have taken my calls upon you. Here is this, you remember how duchess say, duchess उसका रिप्लाई किस तरह दिए, beauteous, यहाँ पर दिए नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, beauteous, मुझे आप खूबसूरत कह रहे हैं, indeed हाँ, I think you, I look young for you, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ क्या है, यंग दिखती हूं, सेक योर सेक, मैं तुम्हारे लिए ही दिखती हूं यंग, यू हैव टेकन माई कॉल अपन, कॉल्स अपन, तुमने मेरे आवाज को सुना और आया। यहां पर अगर इसका पैराफ्रेज कर दिया जाए, बहुत ही आसान और बेहतरीन पैराफ्रेज होगा। देखिए इस पैरा, बिकॉज व्हाई आई एम गिविंग यू द पैराफ्रेज, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश लाइक दिस, लर्न दिस वर्ड, what is the meaning of this excellence, the meaning of the experience is no. I say if you will go through the right teacher, then your mind ultimately speak out. So you look at this paraphrase. You called me beautiful, I thank you for it. I look young for you, for your sake. It is good that you have taken my responsibility and anxiety upon your shoulder. आप, ये बहुत ही अच्छा है कि that you have taken my responsibility, मेरा जिम्मेदारी आप लिए है, and anxiety upon your shoulder, आपने अपने कंधे पर मेरा जिम्मेदारी ले ली है। That means this is the way of talking that at first the people were speaking like this, but now English already has been a simple language, because we would like to express before our friend in a very simple way as well as informal way, then he can understand us. Now again look at here, Antonio, I will fetch your grace the particulars of your revenue and expense. बहुत अच्छा बात बोला। देखिए एंटोनी कितना बेहतर इंग्लिश बोला, I will fetch your grace that particularly of your revenue and expense. यहां पर अगर पैराफ्रेज करते हैं तो ये होता है, I shall bring to your grace all the details of your revenue and expenditure. मैं जाकर लाऊंगा वो डिटेल, आपका कितना खर्चा हुआ और कितना आपका टैक्स लगा, ये सब मैं जाकर लेकर आऊंगा। That means this is the way of express. Son, but now at this, if you will learn English, okay, here come, I shall teach you how to speak. They are teaching you the sentences. It is your present tense, your past tense, your future tense. You will speak like this, but no, the word is changing according to your thought. First, you think that I shall speak, then you can speak. I already have finished this lesson. I hope that you will subscribe my channel and go to regularly to learn something more. Thanks a lot.